question. We will start post-lunch session with your question. So, do we have some questions? Yeah, please. हाँ जरूर. लिटरेचर रिव्यू पर पेपर लिखते हैं? नो नो मैं समझ. मतलब पेपर मीन्स आर्टिकल की बात कर रहे हैं आप? आर्टिकल. हाँ नहीं 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 मैं समझ गया. ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आर्टिकल होता है ना, ब्रॉडली जो आर्टिकल जब आप पढ़ते हैं, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ आर्टिकल. थ्री काइंड्स. द मोस्ट कॉमन आर्टिकल आर based on empirical studies. Data have been collected and based on that study article has been written. So we call this kind of article based on empirical studies. Second kind of article which you have just said, we call review article. The review article is different from book review. You might be knowing a concept of book review कि आप जर्नल में भी देखते हैं. Generally size of book review इंटरनेशनल जर्नल में कहते हैं साहब 1000 वर्ड या 1500 वर्ड से ज़्यादा नहीं चाहिए, जगह नहीं देते हैं उससे ज़्यादा लिखने के लिए. तो यू रिव्यू अ बुक, क्रिटिकली रिव्यू अ बुक, तो लेंथ इज 1000 to 1500 वर्ड. बट रिव्यू आर्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम बुक रिव्यू. इनफैक्ट जो मैं बिफोर लंच कर रहा था, आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन एनुअल रिव्यू, इट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ रिव्यू आर्टिकल. So in review article, for writing review article, suppose I want to write a review article, what I have to do? What would be the first step? So you write review article on certain topic. Okay. So first you identify your area, your topic, and then you collect all the important articles related to that area. Okay. The second step. After collecting all the articles and reading them and rereading them and again reading them, so many times you have to read. You have to categorize all those articles under various heads. Under various heads. So review article will be organized under various headings. क्योंकि एरिया है, एरिया का सब एरिया होता है. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड राइट. Suppose I want to write a review article on child rights. So what I will do, I will try to collect all the published good paper, not in very ordinary kind, predatory kind of journal, that we should not include. Authentic journal. Then I will read them. And one time reading is not sufficient. अभी भी इसी स्टेज में एक आर्टिकल को समझने में मुझे कम से कम 3 बार लगता है. तो आई रीड 3 times वन आर्टिकल. आप सीरियसनेस समझें. और जब मैं आपके स्टेज में था, मुझे तो समझ ही नहीं आता था, तो मुझे तो 10 बार पढ़ना पड़ता था, फिर अपने टीचर से डिस्कस करना होता था, तब धीरे धीरे समझ में आने लगा. तो रीडिंग आर्टिकल फ्रॉम गुड जर्नल इज नॉट वेरी ईजी थिंग. वी हैव टू डेवलप. ऐसा एक दिन में 2 दिन में नहीं होता है, वो डेवलप करना होता है. आप डिस्कस करते रहेंगे तब समझ में आएगा कि क्या है. आर्टिकल के लैंग्वेज भी टफ होते हैं, बुक चैप्टर से वो अलग होता है. व्हेन यू रीड ऑल दोज आर्टिकल्स, देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. जैसे मैंने कहा ना, जब आप 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो लगेगा कि देयर आर सम पेपर दैट आर डीलिंग विद द टाइप्स ऑफ चाइल्ड राइट. तो चाइल्ड राइट which I thought is one concept, but by reading now articles I am getting an understanding that there are many types or many meanings of. एक heading हो जाएगा types of child right. Then you will find there are some articles which are dealing with causes of child right violation or something like that. Third हो सकता है, there would be articles that are suggesting how to protect child right. Intervention. No? What intervention we should make in our society so that child right can be protected. I have just taken example. Out of all articles now can be arranged under
these three heads. So now I have at least come to know. I will again read now first category and try to know what they are saying. How research started in the field of child rights, what were the questions, then how knowledge in that field advanced with the publication of various articles. Now, at what point has it stopped now? There is no increase in knowledge. No, it has stopped. You can also point out जो बात कर रहे हो, जो बहुत important चीज है, gap in identifying gap in knowledge. It is easier said than done. गैप कैसे हम आइडेंटिफाई करें रिसर्च में अपने फील्ड में, क्योंकि बिना गैप आइडेंटिफाई किए हुए रिसर्च प्रॉब्लम आपका होगा ही नहीं. एंड एज वी नो दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप इन द लिटरेचर इन द फील्ड. आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप डिपेंड्स अपॉन क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग. नाउ आपने कुछ लोगों ने कहा था कि हमें बताइए एक एग्जांपल लेके क्रिटिकल रीडिंग, हाउ टू डू क्रिटिकल रीडिंग ऑफ एन आर्टिकल. एक कोई आर्टिकल है तो कैसे हम पढ़ेंगे. आई सेड वी आर डूइंग रिव्यू. री मीन्स रिव्यू, आप सुनते हैं किसको रिव्यू करना है हमको. रिव्यू मीन्स कि जो पहले हुआ है वी आर नॉट सेटिस्फाइड, लेट्स रिव्यू इट. कोर्ट में भी रिव्यू पिटिशन, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके खिलाफ फैसला दे दिया, यू अपील टू हाई कोर्ट. हमारे यहाँ सिस्टम जुडिशरी में हाई कोर्ट ने फैसला, उसके अगेंस्ट भी आप रिव्यू के लिए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट. तो व्हेन एवर वी रिव्यू इट इज री एग्जामिन्ड एंड री एग्जामिन फ्रॉम डिफरेंट, एंड मेनी टाइम्स वी फाइंड कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको ओवरटर्न कर देता है, बदल देता है, कभी अपहोल्ड भी करता है, ये भी करता है. बेसिकली इन रिसर्च वी हैव टू एग्जामिन इट फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट वाज नॉट यूज्ड बाय द ओरिजिनल रिसर्चर. एक रिसर्च, एक इम्पोर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, वो भी हमारे हिंदुस्तान में जो रिसर्च होता है उसमें कमी है, और ज़्यादातर जो पेपर में रिजेक्ट करता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है. दैट इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात हुई आप लोग के इस वर्कशॉप में अभी तक हुआ है. तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइल्ड राइट पे एक जर्नलिस्ट भी लिख सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, जो भी अच्छे अच्छे हैं, उन्होंने लिखा, व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द, ये काम Let's hope it works. इससे डिस्टर्ब नहीं होगा आपके. इसको नीचे कर दें, इस वाले पॉकेट में. So I have taken this example that in an article or her research on the same topic. What would be the difference between a journalistic account and a research account? आपका रिस्पॉन्स चाहिए. क्वेश्चन समझ में आया कि जर्नलिस्ट हैज रिटन, अ गुड जर्नलिस्ट हैज रिटन a good article, long article on child rights, and a researcher, suppose discipline from discipline sociology, has written a research based article on child right. What would be the difference?
नहीं, जर्नलिस्ट भी जाते हैं, घूमते हैं, सबसे बात करते हैं। जर्नलिस्ट आप देखेंगे जहाँ जहाँ चाइल्ड राइट का इशू हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, उस साइड करते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, उसको कोट भी करते हैं। हाँ, रिफ्लेक्शन, सो यू आर सेइंग रिफ्लेक्शन, जर्नलिस्ट विल जनरली, बिकॉज एक देखिए जर्नलिस्ट का जो वर्किंग सिचुएशन है उसके पास एक दिन दो दिन का टाइम होता है, बिकॉज अगर कोई इमीडिएट इशू है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, so journalist has to write immediately, otherwise its relevance would be lost. So immediacy is very important factor, whereas for researcher it's not necessary to write quickly. So journalist has to, so journalist will visit, data hoga usme, will visit, will talk to many people also and will report it. So journalist work is done very quickly and without much reflection, without much, थोड़ा reflect करेगा but without much reflection. Now what makes a researcher reflective? क्योंकि मैं सुबह से ही आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ यहाँ के रिसर्च का, तो हमारे यहाँ के रिसर्च में रिफ्लेक्शन नहीं होता है. So let's try to learn how can we become reflective or reflexive. That is very important because you are budding researcher, new researcher, and you must learn how to be reflexive about data. जो आप observe करेंगे अपने फील्ड में, how can we reflect on data? क्या आपके अंदर हुनर आना चाहिए, quality, what skill you should acquire or learn so that you can become reflexive about your data. आपने कह दिया, अच्छी बात है, बट नॉन बायस्ड होना ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत डिफिकल्ट है, कोई हो ही नहीं सकता है. कहने के लिए, अपने को तसल्ली देने के लिए हम लोग सब कहते हैं कि हम लोग न्यूट्रल हैं, लेकिन अब फिलॉसफी की बात होगी कि नॉन बायस्ड कोई हो ही नहीं सकता. इट इज दुनिया में अगर कुछ एक इम्पॉसिबल चीज है कि नॉन बायस्ड होना. वी ऑल आर बायस्ड. हम रियलिटी को एक चश्मे से देखते हैं, ठीक है. यहाँ पे मैं अपने सब्जेक्ट, क्योंकि साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज दैट? हाउ डू वी ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व रियलिटी एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद आवर माइंड. इमेजिन अ चाइल्ड, वेरी यंग चाइल्ड, नो, born. We have a theory in psychology which tells us how human mind develops. Human mind. So at the time of birth, child does not have mind. May have very brain. There is a difference between brain and mind. So human child has a rudimentary form of brain. Brain also develops after birth. But child does not have mind. And one philosopher long back, John Locke, said, human being at the time of birth is tabula rasa, which means blank slate. Blank slate. So at the time of birth, human beings are tabula rasa, blank slate. And nature and society writes on this blank slate. Okay? And whatever gets written becomes our mind. And in psychology, research has been conducted and that clearly show that people from different culture think differently, understand things, same thing. They think differently, they understand it differently. Why? Because in different society, there is a different way of socialization and there are different concepts. Different concepts. अब ये भी एक फिलॉसफी की बात है और ये लिंग्विस्टिक में पढ़ा जाता है. Linguistic relativity hypothesis, and it is very important for all researchers. Although it comes from the discipline of linguistic, but it is very important for, because as a human being, whether we do research or not,
we all use language. You will agree with me? Those who are not doing research, they are also using language. अब आप एक एग्जाम्पल में बताता हूँ. हमारे पास बर्फ के लिए दो इंग्लिश में वर्ड है, स्नो एंड आइस. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्नो एंड आइस. जब गिरता है तो वो क्या है? स्नो. एंड व्हेन इट बिकम्स हार्डेंड इट बिकम्स आइस. बट एक ट्राइब होता है स्कीमो. स्कीमो शायद आर्कटिक या अंटार्कटिका, उसी किसी पोल पे है, ठीक है. इन देयर कम्युनिटी देर आर 16 वर्ड्स फॉर दिस. 16. क्यों है उनके पास 16? क्योंकि उनका इकोसिस्टम देखिए, सालों भर बर्फ है. So there are different shades, different quality of. So we can only differentiate between ice and snow. But since they live with that, that is part of their ecology, so their observation is very sharp and acute regarding different phase of. Okay? And why they have developed? Because their survival is dependent upon that. So कोई भी community, कोई ecosystem जो concept develop करता है, इंटेलेक्चुअल पर्पस के लिए नहीं, सर्वाइवल, प्रैक्टिकल इशू. आप एक देखें, हिंदुस्तान और कजन एंड अंकल, और हमारे यहाँ क्या है वर्ड? कजन में मामा का, चाचा का, फूफा का, है ना. सो इन अवर कल्चर दिस डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. whereas in western culture all are cousin, all are uncle. Okay? Because in their culture this distinction is not important. So they have not developed different vocabulary, different concepts. So एक linguistic में जो है वोर्फ करके हुए, WHORF, तो वोर्फियन हाइपोथेसिस कहते हैं, बाद में उनके टीचर थे सेपिर. तो सेपिर linguistic relativity hypothesis. According to this hypothesis, the language we use determines what we observe. So our observation of reality depends upon the kind of language, the concept that we use. Okay? तो अब जो एक ऑब्जेक्टिविटी की बात आप करते हैं, अब ये मैं फिलोसफी के लेवल पे बात कर रहा हूँ. Because in all I said that for doing research we need to have data, observation, but those observations are dependent upon language. क्या लैंग्वेज आपने यूज किया है, ठीक है. जैसे कि आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल. फॉर योर फील्ड वर्क यू वेंट टू अ विलेज एंड यू सी दैट two persons are fighting. I can say that there is a fight between male and female. So I have used the concept male and female. Same phenomenon I can describe, wife is fighting with husband. Now I have used different concept. I may also say a biologically stronger person is fighting with biologically weaker person. I can also use concept economically independent person is fighting with economically dependent person. Same phenomenon, but I am describing with the help of different concept, and meanings are becoming different. Okay? So the concept we use, that determines. So phenomenon does not have its independent meaning independent from the language, the concept we are using. And it is impossible for human being to make sense of reality without use of the word or concept. Okay? And these concepts come from, we don't create concept, it is society that creates concept. हमारे जन्म के पहले ही society में concept है. So we are born in a society where a set of concepts are already there and we acquire those concepts. But I will complicate it more. Those who have done deeper study, they find in any society, वर्ल्ड में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं जो completely homogeneous है.
in every society there are some kind of division. There is some kind of, so let me formulate it. Every society in this world consists of two or more than two groups which stand in power and status relationship to one another. Should I repeat? समझ में आया? दुनिया में कोई भी सोसाइटी है, उसके अंदर दो या दो से ज्यादा ग्रुप हैं और वो ग्रुप इक्वल नहीं है. दे स्टैंड इन पावर एंड स्टेटस रिलेशनशिप टू वन अनदर. एक वर्ड में कार्ल मार्क्स ने कहा था एक्सप्लॉयटर एक्सप्लॉयटेड, हम लोग कह सकते हैं डोमिनेंट सबऑर्डिनेट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कुछ भी कर सकते हैं. किसी भी सोसाइटी में, दुनिया में कोई भी सोसाइटी जो है इक्वल नहीं है पूरा. ये एम्पिरिकल फैक्ट है. और जो मीनिंग है, मीनिंग जो किसी कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ी चीज है कि अपना डोमिनेशन बरकरार रखने के लिए मीनिंग पे किसका अधिकार है. सो मीनिंग कॉन्सेप्ट जो है, सो टू डिफाइन, तो एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हुए, उनका नाम था थॉमस सैल्स. उन्होंने कहा कि इन एनिमल किंगडम रूल इज टू ईट और टू गेट ईटन. इन ह्यूमन किंगडम रूल इज टू डिफाइन और गेट डिफाइंड. जैसे अमेरिका देखते हैं, दादा है तो वो एक पूरे स्टेट को कहता है कि ये टेररिस्ट है, जबकि फैक्ट ये है कि अमेरिका से ज्यादा टेररिज्म किसी ने नहीं किया है. हिस्टोरिकली पूरे लैटिन अमेरिका को बर्बाद कर दिया, मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब कर दिया. लेकिन सिंस दे आर पावरफुल, दे डिफाइन हु आर सिविलाइज्ड. इवन यूरोप जब हम लोग कोलोनाइज किया था, दे डिफाइंड देमसेल्व्स एज सिविलाइज्ड पीपल. और वो ये कभी नहीं कहते थे कि दे आर कोलोनाइजिंग अस. व्हाट दे यूज्ड टू से, they used to say that we are on civilizing mission. Means Europe is seat of civilization and it is moral responsibility of European people to shed light of enlightenment on, और हम लोगों को कहते थे barbaric, uncivilized, underdeveloped, and that's how they justified act of colonialism. So ये जो definition है, meaning है, ये दुनिया में डोमिनेंस, पावर को मेंटेन करने के लिए है. लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जिसको हम कहते हैं कमजोर लोग हैं, कमजोर लोग वास्तव में कमजोर नहीं होते, वो लड़ते रहते हैं हमेशा, वो कंटेस्ट करते हैं. तो कार्ल मार्क्स ने भी ये बात कही थी. सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन डोमिनेंट एंड सबऑर्डिनेट ग्रुप इज नेवर स्मूथ and there is a constant fight or contestation over meaning, over resources, over power. सर एक सिमिलर बुक है पेडागोजी ऑफ प्रेस, बहुत अच्छी. वो तो बहुत अच्छी किताब है, तो क्लासिक है, पॉलो फ्रेरे. तो ये जो ये बात मैं कर रहा हूँ, तो कोई भी मीनिंग आप, तो जब आप एक रिसर्चर है, तो हम भी, हमारा भी क्लास कैरेक्टर है, कास्ट कैरेक्टर है. देयर कैन नॉट बी अ ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड who does not belong to a caste, who does not belong to a gender, who does not belong to a community, है ना. और जो क्लास, कास्ट, कम्युनिटी, एथनिसिटी है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आता है. सो वी परसीव अवर वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अवर एफिलिएशन टू अ पर्टिकुलर कास्ट, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी. इसे जो मैं कह रहा था कि दुनिया में कोई ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो आप ह्यूमन बीइंग बने हैं, जो आपका माइंड, जो सबसे बेसिक ऑर्गन है, आपके माइंड का फॉर्मेशन जो है वो क्लास के हिसाब से है, जेंडर के हिसाब से है, एथनिसिटी के हिसाब से है. सो वी ऑल हैव बायस्ड माइंड, बायस्ड, वो हमारे क्लास के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से ये करते हैं. ठीक है. इसीलिए दो अलग क्लास या दो अलग जेंडर या दो अलग एथनिसिटी के लोग एक ही चीज को ऑब्जर्व करेंगे, वो अलग ढंग से करेंगे. तो आप सोशल साइंस में होगा, फेमिनिज्म बहुत बड़ा एक मूवमेंट है ना. तो फेमिनिस्ट लोगों का क्या कहना है, वो कहते हैं कि जितने सोशल साइंस हैं ये
मेल्स पर्सपेक्टिव से लिखे गए। फेमिनिस्ट रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के एकदम अगेंस्ट है, वो साइंस के अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि साइंस इज ए कॉन्स्पिरेसी बाय मेल, पावरफुल मेल, to justify their viewpoint as universal. Basically, it is a male's perspective, but by taking help of science, they are justifying it as universal and objective. There is nothing like objectivity. So, feminist perspective and बहुत important है social science research में, paradigm की भी बात आप करते हैं, तो आप बिना feminist perspective पढ़े हुए आप social science का अच्छा research नहीं कर सकते। और वहां से ये knowledge जो है, तो at philosophical level, any phenomenon, any observation, any meaning can be contested and it is contestable. तो कोई मीनिंग को एक और बात में कहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि हमारी सोसाइटी में पेट्रियार्की है, मेल फीमेल में अनइक्वल स्टेटस है, इट इज मेल जनरली हु डोमिनेट्स एंड कंट्रोल्स फीमेल, और बहुत जगह अनफॉर्चुनेट है कि मेल ऑल्सो बीट्स फीमेल। अब आप किसी सोसाइटी में आप गए फील्ड वर्क के लिए एंड यू केम अक्रॉस दिस फिनोमिनन ऑफ वाइफ बैटरिंग और बीटिंग। आपने फीमेल से बात किया हु इज बीइंग बीटन बाय हर हस्बैंड, एंड सपोज शी सेज कि वो तो आदमी है, आदमी का तो अधिकार ही है मारने का, आई हैव नो प्रॉब्लम। एज ए रिसर्चर हाउ विल यू इंटरप्रेट इट? एक कहेगा वो तो फीमेल जो कह रही है तो उनकी बात तो माननी ही हमको है, बिकॉज दिस इज योर डेटा, यू हैव कंडक्टेड इंटरव्यू विद द लेडी एंड शी सेज एग्जैक्टली दैट आदमी का काम मारना है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज ए रिसर्चर व्हाट विल यू डू? ओके, जो रिसर्च है, जो पैराडाइम की बात जो कही गई कि रिसर्च का एक टाइप नहीं होता और एक पर्पस नहीं होता है। एक रिसर्च जो हुआ, जो साइंस की आप बहुत बात करते हैं और जो लोग साइंस यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिविस्टिक रिसर्च, पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम, और उसका एम होता है टू एक्सप्लेन फिनोमिनन, टू प्रिडिक्ट फिनोमिनन। एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन इज द गोल ऑफ रिसर्च, ठीक है। लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोशल साइंटिस्ट है, कोई सोशियोलॉजी के हैं यहाँ पे, वेबर का पढ़ा होगा आप लोगों ने। सो व्हाट डज वेबर से, मैक्स वेबर से अबाउट इंटरप्रिटेशन। सो मैक्स वेबर जो है, ही सेज दैट सोशल साइंस इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंस। अब ये एक, अब इस पे काफी बात हो रही है कि मॉडल ऑफ नेचुरल साइंस इज नॉट अप्रोप्रिएट टू डू रिसर्च इन ह्यूमन एंड सोशल साइंस। लेकिन फैक्ट ये है कि ज्यादातर सोशल साइंस में नेचुरल साइंस का ही मॉडल हम यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया आप लोग को, इवन पूरा क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, दिस इज इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल साइंस। तो ये माना गया था 19th सेंचुरी में कि साइंस इज द बेस्ट वे टू नो रियलिटी। सो लेट्स, इफ natural science method has been successful in unraveling mystery of physical world, so it will be equally effective in unraveling complexity and reality of social and human world. So historically, in all social science disciplines, model of natural science was adopted, but around 1950-1960 there was a reaction against that. वेबर तो पहले थे, 1920 में डेथ हो गया था, जर्मनी में और लोग भी थे, डिल थे हुए, रिकेट हुए, एंड दे से कि नहीं, एम ऑफ सोशल साइंस रिसर्च और ह्यूमन साइंस रिसर्च इज वेरी डिफरेंट। सो इंस्टेड ऑफ प्रिडिक्शन एंड एक्सप्लेनेशन, आवर गोल शुड बी इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हमें हर्मेन्यूटिक्स टेक्स्ट को इंटरप्रेट करो हम। सो इन सम, यूज ऑफ नेचुरल साइंस मॉडल टू डू रिसर्च इन सोशल एंड ह्यूमन साइंस इज इनएप्रोप्रिएट। फेमिनिस्ट लोग यही बात कर रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में कि
ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत नेचुरल साइंस का मॉडल यूज किया गया सोशल साइंस में मेल पर्सपेक्टिव को जस्टिफाई करने के लिए, एंड फीमेल्स वॉइस आर नॉट कमिंग। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है, वो करेंगे पूरा खो गया है। वेयर इज द फीमेल, वेयर इज फीमेल्स वॉइस? और वो और पोलो फ्रेरे जिनकी बात हुई, ये लोग थर्ड एक जो पैराडाइम रिसर्च का है, वो कहते हैं व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव गोल ऑफ रिसर्च इन सोशल एंड ह्यूमन साइंस। दे आर नॉट इवन सेटिस्फाइड विद, उससे तो नहीं सेटिस्फाइड, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन, they are not even satisfied with interpretation. They are saying aim of research in human and social science should be emancipation. Emancipation. So Paulo Freire and all feminists, they say, so goal of research is not simply to know what is the reality, but how to change that reality. Karl Marx का ग्रेव, जहाँ उनका ग्रेव है, उसके ऊपर लिखा गया है यही करके, एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जो जिन लोगों ने कार्ल मार्क्स पढ़ा होगा, philosophers have so far interpreted how the world is. Question, however, is how to change it. So, goal of social science research should be to bring about change in social reality so that there can be emancipation of human beings, emancipation of those who are oppressed, suppressed, disadvantaged, subordinate groups. और साइंस के बारे में जो पढ़ा गया है कि साइंस का ज्यादातर मिसयूज हुआ है, तो यूज ऑफ, और प्रोफेसर मिश्रा ने पढ़ाया होगा, ये बहुत बड़ा विषय है। अच्छी यूनिवर्सिटी में जो वेस्ट में है, वहाँ रिसर्च कोर्स में एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं फिलॉसफी ऑफ साइंस। फिलॉसफी ऑफ साइंस इवन फिलॉसफी डिपार्टमेंट में भी बहुत प्रोफेसर को नहीं आता है। थॉमस कून की जो है, इट इज नो आफ्टर हिम दिस सब डिसिप्लिन इमर्ज्ड। उसके बाद कार्ल पॉपर आते हैं, लकाटोस आते हैं, लॉर्डन आते हैं, उसके बाद और भी है फिलोसफर, कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ। तो एक इंडिपेंडेंट एरिया है जिससे कि हम लोग ये जानते हैं कि साइंस क्या है। और एक बात मैं कहूँगा, शायद आपको लगेगा अच्छी, लेकिन ये रियलिटी है, जो साइंस के रिसर्चर हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे भी आप पूछिए कि साइंस क्या है, उनको नहीं पता है। वो साइंस करते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि साइंस क्या है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में इस पे कोई तवज्जो ही नहीं दिया जाता है कि साइंस क्या है। इसकी स्टडी फिलोसफर्स करते हैं इन सब डिसिप्लिन कॉल्ड फिलोसफी ऑफ साइंस। और अब जो है ये थॉमस कून के बाद जो पैराडाइम शब्द है कि साइंस का एक मतलब नहीं होता है। मैंने चूंकि न्यूटन की बात की और क्वांटम फिजिक्स की, सो देर इज ए न्यूटोनियन पैराडाइम इन फिजिक्स एंड देर इज आइंस्टीनियन एंड क्वांटम फिजिक्स पैराडाइम, क्वांटम पैराडाइम इन फिजिक्स। फिजिक्स में ही दो, एक और पैराडाइम आया जिसको कहते हैं कियोस फिजिक्स। न्यूटन के साइंस में होता था कि अब पढ़ा भी होगा स्कूल में, इतना फोर्स अप्लाई करेंगे तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, मीन्स यू कैन प्रिडिक्ट। अगर इक्वेशन आपको पता है, यू कैन प्रिडिक्ट कि अगर इतना फोर्स लगाए तो कितना दूर वो तक जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। जो एक कियोस फिजिक्स है वो ये कहता है, और सिंपल वे में, कि फ्लटर ऑफ ए बटरफ्लाई मे कॉज स्टॉर्म। मतलब बटरफ्लाई ने थोड़ा सा अपने पंख को फरफराया, इससे हो सकता है कि तूफान आ जाए। मतलब फोर्स बहुत छोटा लगा, उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा हो सकता है, या फोर्स बहुत बड़ा है और कॉन्सिक्वेंस छोटा भी हो सकता है। सो वी कांट प्रिडिक्ट, इट्स कियोटिक वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा पैराडाइम फिजिक्स में है। इवन विद इन साइंस, दोज हु आर गुड फिजिसिस्ट, टॉप लेवल के हैं, दे अंडरस्टैंड लिमिटेशन ऑफ न्यूटोनियन physics, Newtonian paradigm. Unfortunately, in social science, in the name of science, they only know about Newtonian science. Physicists consider Newtonian paradigm as an outdated paradigm or limited paradigm. But for social scientists, Newtonian paradigm is the paradigm. It is the science का मतलब केवल यही है। तो
आप देखिए कि कितना हम लोग इग्नोरेंस में काम करते हैं। इतनी तरक्की हो गई साइंस में, और फिलॉसफी ऑफ साइंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये साइंस का क्या मीनिंग है और क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो साइंस का मीनिंग जो 19th सेंचुरी में था वो मीनिंग 21st सेंचुरी में नहीं है। साइंटिस्ट लोग नहीं मानते हैं उसको। उसी तरह से एक और कंफ्यूजन जो सोशल साइंस में अक्सर होता है, आपका क्वांटिटेटिव भी आपने किया, क्वालिटेटिव की भी बात चल रही है। अक्सर अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, तो वन टिपिकल आंसर विच आई गेट कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज मोर सब्जेक्टिव। I think this concept, this answer is wrong. And why it is wrong? Because we don't understand the meaning of objectivity. Number does not make, you. And I have some questions. Yeah, please ask. And I have one objection Yeah. about one opinion. Yeah, please. In case of this journalism, you have told it is instant or something very fast, Hmm. sudden kind of journalism. That's, I think it's a subjective statement. There are different forms of journalism. Maybe long form journalism is different from that. And I have read this, my name is Sachin, I'm a communication scholar from Pondicherry University. Yeah, good. I have read this abstract from APS ICNET, Trauma in Children Exploring Post-Traumatic Growth Along. My article, no? Your article by you and Shah. Hmm. So I have read this line from that abstract. Hmm. Very few studies have examined PTG among children, particularly among the conflict zones in South Asia. So my question is, how come you reached to this gap particularly? Because We reviewed literature on PTG and trauma. So whatever published papers were there, no? We found that research on trauma, especially in South Asian region, is very, very rare. It was not there. it's not the trauma, it's about the children. Yeah. Particularly, I think this work is dynamic, especially in the context of whatever happening in West Asia now in Israel and Palestine. So I've seen one more article down that this thing was published in 2023. It's also this child post-traumatic study only. One is, let's try to understand. There are two concepts in psychology. One is the older concept we call PTSD, post-traumatic stress disorder. The work you are referring to, we have done, it is PTG, post-traumatic growth. So conceptually, earlier understanding was that if there is a trauma, it will lead to disorder. So PTSD. Now new theory that has come, and our work is based on that theory, that of course trauma leads to disorder, but not necessarily all the time disorder. We have observed, and it has been reported, that there can be growth also post-trauma. So this theory which we have used in our research, post-traumatic growth, and very few research has been done taking the perspective of PTG to study children who are affected by conflict in South Asian region. If you can explain all these things like literature review, methodology based on this work, with examples that will Good. I think I must appreciate your effort that you did this research, that who is the resource person and what he has published, and the best work, my best work you have referred to. So I must appreciate, it's good, it shows your sincerity. Please. I accept your challenge, the statement I made that it is done quickly. It is in relative sense. I know that there are very good journalists also. Some journalists they have done, I know personally them, they have done PhD from Yale University, senior person, very knowledgeable, very good researcher. But the condition under which you have to write, a journalist has to respond to the immediate situation. Otherwise it becomes irrelevant. So it is in relative sense. It's not so. Some journalists will write immediately next day. So some event has taken place today.
and it will get published tomorrow. Some maybe after a week, maybe some after a month also. But a researcher has no such compulsion. Researcher can take time. Another thing is that, and I think it is very important for research. Can I Yeah. explain? Sir, I think sir has told right. Actually, Walter Lippmann is a journalist, theorist. He has given in public opinion that Yeah. how reality is created. He cited example from New York Times how articles are manipulated, fabricated, and how reality is constructed. So journalists do in a hurry way. There is a branch in journalism which is investigative journalism, but few work is done. Yeah, So yeah. I think No, so yeah, this is also very important. Let's try to understand. It's not that by making this statement, I am undermining importance of journalism and I am exaggerating the value of research. No, I think in our society or for any society, both things are required and both are important. Journalism has its value and research has its value. Only they work under two different conditions. But when a journalist writes, journalist will not do review of literature, generally. But as I said that some journalists are very qualified, very knowledgeable. They have done their PhD from top university. So it's not that they do not know how to do review of literature. But because of the demand of the work and the nature of work they are doing, either in that work review of literature is not required and other method of research. Okay? So whatever is feasible. Whereas a researcher, I am talking about what is done, we should not be guided by that. How research should be done in ideal sense. And right from the morning I have been harping upon this concept of philosophical level. So, and in that context I said linguistic relativity hypothesis by Orphian hypothesis. So, I am casting a doubt on all human beings, journalists and researchers also, that objectivity is not possible, which means all observations, all perceptions, all our learning and understandings are partial, motivated, incomplete. It is a big philosophical statement. All our knowledge, understanding, observations are partial, motivated, incomplete. Okay? Because we observe or understand things with the mind. Without mind we can't do that. And composition of our mind is that it is biased because it has a class nature, it has a gender nature, it has a ethnicity nature. So the instrument which we use to understand our reality is itself biased. This is, now we are dealing at the level of philosophy. So if you are philosophical, then a concept comes in research. It is more relevant in qualitative research, but I think everybody, all researchers should use, which we call reflexivity of a researcher. What is reflexivity? It is awareness on the part of researcher about one's own subjectivity. And I will say that because unfortunately we use some kind of binary opposite, objectivity and subjectivity, and we attach positive value to objectivity and negative value to subjectivity. It is completely wrong, There cannot be objectivity without subjectivity, first statement. Subjectivity is the foundation of objectivity. So there cannot be a concept. We cannot conceptualize objectivity which is devoid of subjectivity. So those who talk in terms of objectivity versus subjectivity, they have not even iota of understanding about either objectivity or subjectivity. If you want to read on this concept, because it is a philosophical concept, all scientists will say that their work is objective. Hardly any scientist in the university
know what is the meaning of objectivity. I can challenge. I do not see any, even good professors whose paper get published in top journal from science, they have read anything on objectivity. Unless you have read authentic literature on objectivity, you do not know meaning of. So Oxford University Press, for last 8 or 9 years, he has been publishing a series which is called Oxford Short Introduction. Some of you may have seen. Oxford Short Introduction on one theme. It is a small booklet type. So one such booklet or introduction is on objectivity. Unfortunately, I am forgetting the name of author. But on Google you can see Oxford Short Introduction, Objectivity, you will get. I bought it for 165 rupees. You can, it will no more than, it is a highly valuable book. If you read this book, you will know that how ignorant research community is about the concept of objectivity and subjectivity. Okay? So first thing is that as a human being, essentially we all are subjective. And subjectivity is something which is inevitable. As long as we are human being, we are subjective only. I think if we want to achieve objectivity, we can become objective by becoming aware of our subjectivity. And this is what we mean by reflexivity. So reflexivity is a process whereby you can achieve objectivity. And there is nothing like final point of objectivity. It is objective once and for all. It is again a process. It is a graded manner. You are objective to some extent, not. You can again increase your objectivity. Okay? So by becoming reflexive about how I am thinking, why I am thinking, the way I have observed reality, how much I am being influenced by my gender, my class, my education level, my ethnicity, my religious group, everything, my discipline which I have read. So there is nothing like objective observation. All observations are contaminated with colored glass, with tinted glass. Because our mind itself acts like a tinted glass. There is no mind which acts like a white glass. All minds are like a tinted glass. That is reality of human mind. So at research level, when we start reflecting like that, you are becoming reflexive and you are becoming philosophical. Okay. Now review of literature, it has a role in review of literature, that we are suppose reading one article which is based on empirical study. So person has done research, and a good research has always some theoretical framework. So one distinction between a journalistic account and a research account is that a journalistic account is not situated in a theoretical framework, whereas a research account, a good, should be situated in a theoretical framework. ये दूसरी बात है कि हिंदुस्तान में theoretical framework लोगों को पता ही नहीं, और करते भी हैं तो एक रूटीन में कर देते हैं, वो ढंग का नहीं होता है. And it is theoretical framework that, it is like a road map, it is a guide. So theoretical framework is like a lens for us, and it directs you how to interpret the literature you are reading. Review of literature में पढ़ना पड़ता है ना, एक आर्टिकल को पढ़ने का 100 तरीका हो सकता है, उसके 100 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. What interpretation you are using for your research, it depends upon the theoretical framework you are taking. And there are clear examples of them. जैसे कि if I am a Marxist, that is my theoretical framework. So I will interpret and critique literature in my field from Marxist framework. But somebody who is not a Marxist, who is a structural functionalist, sociologist जानते हैं, or Weberian, his or her interpretation of same article would be different.
Now, as a researcher, we should explicitly acknowledge from which perspective I am reading the literature. Journalist ये नहीं लिखेगा. May be aware, because I said they are very qualified, some of very qualified. They know, but in their journalistic account, they will not write that as a Weberian I am looking at reality in this way. क्योंकि वो कॉमन पब्लिक के लिए होता है, कॉमन पब्लिक विल नॉट अंडरस्टैंड एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग वेबरियन और मार्क्सिस्ट, बिकॉज उनका टारगेट ऑडियंस इज डिफरेंट. व्हेयरएज research article is written for specialized people, intellectuals, so they will be able to understand what is the meaning of being Weberian or Marxist or structural functionalist or feminist. So a researcher in the beginning should state his or her theoretical framework very explicitly and should also give reason for doing so. ये उस तरह का नहीं कि you go to a restaurant और रेस्टोरेंट वाले से पूछा कि स्नैक्स में क्या है, बोला पकौड़ा भी और समोसा भी है, तो हमको समोसा दे दो because I like samosa. Yeah, you have right. But in research, you can't say that simply you like Marxist framework, that's why you are using it. You may have liking, but you have to give rationale for that, logic for that. So you have to do even review of literature. So जो review की बात है, when you read literature in a field, you can say that I have read 50 articles. I found out of 50, 10 researchers followed Marxist framework, whereas other 20 followed Weberian framework, and rest of them followed structural functionalist framework. So what you found, ये लिखा नहीं है उसमें, but by your training you could understand from which framework they have written it. And एक framework लेने से उनका interpretation कैसे बदला, or what is the impact. So there is nothing like truth. All truths are dependent upon the framework. जो चश्मा हम पहनेंगे वैसा ही दिखेगा. Theoretical framework is like चश्मा, tinted glass, and this is a reality of researcher. So a researcher should first know what is my theoretical framework, should write about it explicitly, and should also reflect on impact of the theoretical framework he or she has chosen on the kind of data, the method and interpretation. Yes. एक तरह से कि एक रिसर्चर को इतना ईमानदार होना चाहिए कि वो बता दे कि उसके रिसर्च में बायस क्या क्या है. अगर आप अपने बायस के बारे में ईमानदारी से बताते हैं, then you are objective. Okay? So by becoming aware of one's subjectivity, one becomes objective. Because then when you write that you have done research from Marxist perspective, as a reader I know what is Marxist perspective and how does Marxist perspective influence perception of reality. If I am not a Marxist and I have reason not to become a Marxist, I can critique your work. So in review of literature, I will say that this researcher was guided by Marxist framework, and Marxist framework has this limitation, and that's why this researcher could not perceive reality the way he or she should perceive. जैसे हिस्ट्री को कोई है यहाँ पे? Yeah, you are from history. Are you aware of subaltern history? थोड़ा सा पढ़ा होगा. तो subaltern history जो है, ये इंडिया का एक कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्रियोग्राफी में, और ये सारे सबल्टन हिस्टोरियन पहले मार्क्सिस्ट थे और बेसिकली वो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क से ही आते हैं, बट उनको मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में थोड़ा सा लिमिटेशन दिखा, क्योंकि मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क पूरी रियलिटी को क्लास के टर्म में देखते हैं, लेकिन हम लोग एक कॉलोनियल सोसाइटी, पोस्ट कॉलोनियल भी सोसाइटी है. तो कॉलोनियलिज्म किस तरह से हमारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस किया उसको, और उसमें जो आइडियोलॉजी थी कॉलोनियल की, उसको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव उस ढंग से नहीं देख पाता, वो केवल क्लास के हिसाब से ही देखता है. हाँ, दूसरा एक जो है, एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूरोसेंट्रिज्म. सुना है आप लोगों ने? तो जितना सोशल साइंस हम लोग का है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ?
यूरोप या अमेरिका। तो ऑल सोशल अवर अंडरस्टैंडिंग जो है वो यूरो अमेरिकन है, यूरोसेंट्रिक। सो यूरोसेंट्रिज्म इटसेल्फ इज ए बायस। तो ये जो सबॉल्टन हिस्ट्री है, इन्होंने ये भी कहा कि इवन मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क इज ए यूरोसेंट्रिक फ्रेमवर्क। जो इनलाइटनमेंट है, they do not question enlightenment, the concept of enlightenment. Now in third world country or developing country, now we used another word, the global south. And question is now being raised on the validity and so-called superiority of enlightenment and modernity. एक पेरू के सोशियोलॉजिस्ट हैं, he is no more, Anibal Quijano, and he has given a concept of coloniality, not colonialism. So colonialism is over. After 1960, there is no political colonialism. But according to him, there is coloniality. And what he says, coloniality is the dark side of modernity. हम लोग आजकल बहुत मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं, and we all attach positive value to modernization and modernity. Anibal Quijano pointed out theoretically that modernity has its dark side. What are the dark side of modernity? Colonialism is one. Okay. Then two world war. Thereafter Cold War, and there is a ecological crisis. And हम लोग जो कहते हैं third world or developing country, there is a theory development of underdevelopment. Sociology वाले जिन्होंने पढ़ा होगा sociology of development में, कि जो it is not a natural phenomenon that Asia, Africa and Latin America are underdeveloped. They are underdeveloped because of European colonialism and modernity. So these are the dark side of modernity. So dark side of modernity is known as coloniality. So according to Quijano, we should always write modernity stroke coloniality. Modernity should not be written independently. और उसके बाद एक आए वाल्टर मिग्नोलो, वो कहते हैं एक और टर्म जोड़ो, मॉडर्निटी, कोलोनियलिटी, डीकोलोनियलिटी. सो नाउ एक डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं, तो कहते हैं डीकोलोनाइजेशन इज ए ओल्ड थिंग. लेटेस्ट थिंग व्हाट वी शुड एम एट इज डीकोलोनियलिटी. सो ये थ्री वर्ड विल गो टुगेदर, मॉडर्निटी stroke coloniality stroke decoloniality. So basically what is decoloniality? That when you point out darker side of modernity, you are sensitizing people about the dark side of that, and then we can become decolonial. So entire social science that way is Eurocentric. It suffers from Eurocentric bias. And subaltern historiography, जो हिस्ट्री में नया है, although they were Marxist, they still use Marxist framework, but they find even Marxist framework there is a Eurocentric bias, because Marx never questioned the superiority of enlightenment. Marx also believed, and there are statements which I am not remembering right now, that although he was a critic of colonialism, but he said that it's only through colonialism the feudalism and barbarism of Asia and Africa will be removed. So he was also biased. He was in favor of, he accepted the concept of enlightenment. But now we have enough literature that questions the value of enlightenment and what are the problems of enlightenment and of modernity. And science is also part of modernity, enlightenment, so there is problem of science also, which we now read in this subdiscipline called philosophy of science. So could I answer to your question? Sir, I'm interested more in your, My research. Okay. particularly that work have some dynamics now. Okay. Yeah. So let me devote some time on my work, but not to highlight that. Yeah, so that we can take an example, as an example.
that how did I decide about this topic, the research problem. So review of literature. It's not that, and I said in the morning itself, nobody can claim that he or she has learned 100% about review of literature. So it applies to me also. So the review of literature which I have used in that research is not 100% complete. So it is, all review of literatures are partial, or partially correct. So that is true. One bias I can say that my research uses quantitative data. And I told you few minutes ago that there can be three broad paradigms of research: the positivistic science, then interpretive, and the emancipatory. So quantitative data which I have used, so my research falls in the first paradigm. And first paradigm has a limitation. So those limitations are applicable to my research also. And in my review of literature, I did not highlight that limitation. So you can say that is my limitation of review of literature. That, or I was not honest enough, let me admit that. I was not honest enough to admit my research bias and selection of my method. I should have been honest enough that I am being guided by positivistic framework, and positivistic framework has this limitation. So my research will have also. I have not written that. I have not written, which I have shared with you, that if you ask me personally what should be the goal of social science research, it should be emancipatory. Why did I not use that framework? Because APA, although I highlighted its importance, but APA itself is guardian of positivistic research. If your research is not within the positivistic paradigm, it will not be published in APA journal. And I had temptation, because if you are in psychology, it's like going to Mecca. So for a psychologist, getting published in the APA journal is lifetime achievement. I can say, with anybody that I have published in APA journal, and people can't take you lightly. But for getting published in APA journal, I have done compromise on, ethically I should have done a research which should be in emancipatory paradigm, ethically. So I did ethical compromise to advance my career by publishing in APA journal. It's a big ethical issue. So that way I am not honest in my paper. I am not explicit about my ethics. Why did I go for quantitative research? Because it is such a sensitive issue. Children in Kashmir who lost their parents in armed conflict, it's a highly sensitive issue. And what I am doing? I am using quantitative method. So it's okay to not be honest? Huh? No, it's not. It's not. So why? I am admitting that what did I do? I preferred my professional advancement over being ethical, which is unethical thing. So I am admitting in front of you, I was that way unethical. That I preferred, I gave importance to my professional advancement over being ethical. Yeah, so if you do review of literature, you write this thing about, you critique my work in that way. And this would be example of a good review of literature. When you are not only by reporting what finding I am reporting, but you reflect on this. Why this researcher has used this quantitative method? And what kind of trauma, even maybe in the process of collecting data, we can traumatize the children. What business I have to traumatize a child who is already traumatized? Again, it's an ethical issue. As a researcher, I am becoming insensitive.
All such issues are part of ethical concern. Okay? So, by becoming philosophically reflexive, you know, so your even formulation of research problem. So, what would be the research problem? It will be influenced by your research paradigm. And what research paradigm you should choose will determine that what is your ethical position. My belief is that a positivist paradigm in social science is not a good, ethically not very sound. Even interpretive is better than positivist paradigm, but not sufficient. Goals should be emancipatory. If I have not been able to do any justice, I have not been able to do any good, if my research has not healed the children, because I got data information from the children who are unfortunate, who lost their parents in armed conflict. Did my research heal them, heal their psyche? No. So it's not very good research. But it's an ethnographic work, it will have, might have much impact. Yes, might have. That's why I said that no research is complete. Every research should be critiqued. Every research should, even it's not that ethnography, because ethnography historically is a very, very dubious kind of method. You know, ethnography is a method used by anthropologists. And anthropology historically is an imperialist discipline. What was the aim of? What is the major difference between anthropology and sociology? Sociology is the study of modern society. So when European and American will study their own society, it is known as sociology, sociological study. When they will study African tribe, Asian tribe or Latin American tribe, it becomes anthropology. And why they were doing that? To prove that they are uncivilized and inferior, and that's why intervention of European is required and justified. So anthropology as a discipline historically were used as a tool to justify colonialism. So that is historical meaning of ethnography. So ethnography by itself does not become a panacea, no, that all the problems would be solved. So now new concept is coming, critical ethnography. Critical ethnography. So as an ethnographer also you should be critical that why you are doing this research every time. Only for publishing paper, advancing my career, or is it going to benefit the community? And important concept which is now relatively new concept which I was discussing during lunch break, epistemic justice and injustice. The knowledge, because in every, what is the end product of a research? Generation of a knowledge. When you generate knowledge about a community, does this knowledge benefit community or it disparages, portrays a negative picture about the community? So most of the anthropological research, what they did, they disparaged the image of community and they justified their superiority. It was epistemic injustice, or we use also concept now epistemic violence, very new concept, a very powerful concept in social science. So are we doing epistemic violence? फेमिनिस्ट लोग तो कहते हैं कि जितने साइंटिफिक रिसर्च हैं ये फीमेल को सप्रेस करने के लिए, देयर इज एपिस्टेमिक वायलेंस in all social science research that use scientific method. This kind of discussion which I have shared with you right now, we are discussing research at the level of philosophy, so philosophical reflection. And when you write your thesis like that, you deserve to be awarded degree of Doctor of Philosophy, because you have taken knowledge at the level of philosophy. Any other question? Sir,
Yeah, necessary to be critical all the time. all the time, yes, all the time, especially in social science. Like फिर तो कोई भी study sufficient होती नहीं, सफिशिएंट का क्या मतलब है आप ये बताइए पहले, व्हाट इज द sufficient in the sense like बहुत सारे theories में बहुत बड़ी theories थी. For example, Sylvia Baldwin and structures of patriarchy. ठीक है. अगर कोई उसको हमेशा ही criticize करता रहा, कि देखिए क्रिटिसाइज करने का नहीं मतलब, बेसिकली क्या है हम लोग, इट्स अ कांस्टेंट रिफॉर्मेशन. वी डू नॉट बिलीव दैट एनी थियरी इज कंप्लीट. जैसे कोई मशीन आपने बनाया, कोई टेक्नोलॉजी होती है, तो कंप्यूटर का ही आप देख रहे हैं कि जो नया जनरेशन आ रहा है कंप्यूटर का ये करके, या मोबाइल फ़ोन, इतने रिसर्च हो रहे हैं और सोफिस्टिकेटेड. इसका ये मतलब नहीं है कि बुरा था. पर्पस इज टू रिफाइन इट फर्दर. सो अ रिसर्चर, आप रिसर्च क्रिटिक करके क्या करते हैं, उस थियरी को और रिफाइन करते हैं, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं, उसके दूर करते हैं आप. So we are not saying that it is completely useless. We are saying that it has served some purpose, but it has also some limitation, and let me highlight that limitation, and also I will suggest how to reform it. और जब आप उसको रिफॉर्म करेंगे, क्योंकि सोशल साइंस रिसर्च जो है, एक सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, वो सारे सोशियोलॉजिस्ट का सोशल साइंटिस्ट को पढ़ना चाहिए. सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये क्लासिक कहा जाता है, बर्गर एंड लकमैन. जो जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, सोशल रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल रियलिटी. फिजिकल रियलिटी इज गिवन, सोशल रियलिटी सिंबॉलिक, हम बनाते हैं. और जो अभी भी बात कर रहे हैं सोशल रियलिटी हम बना रहे हैं. अगर आप मेरी किसी बात को एक्सेप्ट कर लें, इन्फ्लुएंस हो जाए, एक सोशल रियलिटी चेंज हो गई. So social reality is created, is constructed, and research does construct reality. It alters reality, and we have to always be on alert. The intervention we are making into reality, the way reality is being changed, it is good for humankind or it is worse for the humankind. So social science research is not a luxury of a scholar who is sitting on ivory tower. Social science, a responsible social science research is an ethical act and should be considered an ethical act which influences life and death of people, and especially of common people. And we should be, so I remember NCRT के बुक में गांधी जी का एक शुरू में था, गांधी तलिस्मान, that whenever you are in conflict and you do not know what should be your next step, you should reflect on whether your action, how your action is going to affect the lowest people in the society. I think that should be the guidelines for all researchers in social science. How our research, because if you are not critical, then what we become? We become status quoist. Because every society has a structure. And if you do not question this structure, we are supporting the status quo. And thereby we become status quoist. And in every structure, एक सोशियोलॉजी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चरल वायलेंस. आप मारपीट नहीं कर रहे हैं, चाकू किसी को नहीं मार रहे हैं, बट द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, वायलेंस इज इनहेरेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. So it is ethical responsibility of all researchers to question the structure in which violence is inherent. Yeah. So, despite the emergence of alternative paradigms, Mm. positivist paradigm still continues to rule Mm. some senses, like you said. So that compromises the position of qualitative researchers to a large extent. Whether it is publication or even in policy, Yeah. we are encouraged to present numbers. So how do we make space for Basically I will again explain it in terms of who rules the world? The privileged people. They have power. And privileged people would never like, majority of them would like to be questioned.
they would not like to lose their privilege. So by accepting superiority of qualitative research, basically they are surrendering their own power, which they will not do. That's why what Marx said, the history of all hitherto existing society is the history of class struggle. So that struggle will continue. As a researcher, we should be part of that struggle. Struggle for justice, social justice. So one of the important goal of social science research should be to provide social justice to the oppressed, the subordinate, the dispossessed, disadvantaged group. If our research does not do that, it is of no use. But you said that we use mind, and mind is biased, Yes. contaminated. Yeah. So why are we doing qualitative research, observation? I said that we know that mind is biased, but how can we become objective? So by becoming the biased nature of our mind, we can overcome this biasness. In quantitative research also, because quantitative research does not mean it is bias free. Here bias is hidden. All observations, whether you take quantitative data or qualitative data, it is product of our biased observation. And it is expected from researcher to be reflexive about the biased nature of bias in data. This is what we mean by reflex. Right now, only in context of qualitative research we talk about reflexivity, but I think it is equally important in quantitative research. That from what position you are looking at reality, what is your goal, why you are doing this research, whose purpose is being served. Okay? इसमें जो सबसे important है Michael Foucault, he is a French philosopher, and he uses this concept regime of truth. So he says there is nothing like truth. It is because of our power we create regime of truth. So even by doing research and proposing some kind of thesis, we are creating regime of truth. But as a researcher, we should ask, who is creating this truth? For what purpose? Who is getting benefited? And who is getting harmed by that? For all research. So critical review, so you can ask all these questions for reviewing all the research article. Who has done this? Why he has done this? What benefit he is getting? And who is getting harmed by that? थक गए आप लोग? हैं? नहीं पूछिए क्योंकि ये प्लीज सर ये लंच में क्वेश्चन पूछा था सर मैंने आपसे सर एपिस्टेमोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल सर ये बहुत मतलब बॉम्बास्टिक वर्ड है सर लेकिन अगर हमें किसी की स्टडी को इस पर्सपेक्टिव से देखना हो कि उनके स्टडी के अंदर इस तरीके के बेंचमार्क हैं या नहीं है तो सर कैसे पता कर सकते हैं? वेरी गुड यू नो 3 concepts are very important: ontological, epistemological and axiological. AXIOLOGIE. These are 3 branches in philosophy. By ontology we mean study of nature of reality. What is the nature of reality? फिजिक्स में भी ये पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक थ्योरी आप लोगों ने सुना वेव थ्योरी, लाइट जो है लाइट इज लाइक वेव, बट दूसरी थ्योरी प्रपोज हुई कि ये कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, इट कंसिस्ट ऑफ क्वांटा स्मॉल, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस, एंड बोथ थ्योरीज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग. एंड it was a big question among physicists, ki, what is the basic reality? And then one of the greatest physicists who got Nobel Prize 1 year after Einstein, Niels Bohr, he says that dual nature of reality. Reality has dual nature.
So don't look for कि रियलिटी का एक ही नेचर होगा. एंड अभी एक नोबेल प्राइज लास्ट ईयर मिला फिजिक्स में, क्वांटम इंटेंगलमेंट. यूट्यूब में आप सुन लीजिएगा उसको, क्या इसका मीनिंग है. सो व्हेन वी ऑब्जर्व, फिजिक्स में आया कि द वेरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स रियलिटी. हम लोग का जो पूरा क्या है कि रियलिटी इज ऑलरेडी देयर and with our method we map that reality or measure that reality. Now quantum physics is given different understanding, that before your act of observation there is no reality. The moment you start observing, it creates reality. Okay, so in quantum physics they say that we are no longer observer, we are participant. So act of observation creates what is being observed. Dual nature of reality. So reality क्या है? So in social science, let's look. In all social science, explicitly or implicitly, we have concept about individual, we have concept about society, and we have concept of relationship between individual and society. I will take. Is there any student from economics? है? नहीं है economics में. Economics एक subject है कि Adam Smith started this subject and he assumes that human beings are rational, and all their behavior and actions are guided by this rational consideration. And what is rationality according to him? To maximize self-interest. Adam Smith is the first philosopher. He was not only an economist, he was an Scottish Enlightenment philosopher who morally justified selfish behavior. He says that if each individual behaves selfishly, it will lead to societal good. Okay? That is the assumption about human being. But are human beings really like that? And we have counter evidence and counter theory. We say no. Human beings are not rational. They are rationalizing. What is the difference between them? Rational versus rationalizing means we are not rational. We do things emotionally, many things, and post hoc later on we try to justify that it was rational. So human beings are not rational. They are rationalizing. So there is not one understanding or consensus about the what is meaning of individual in all social science disciplines, including psychology, media, everything. Similarly, what is society? So sociology is a discipline that studies society. So one of the founder of sociology, Emile Durkheim, according to him, society you can liken with human body. As human body has a different organ, structure, society has also a structure. And these structures are arranged in such a fashion, it is functional. That's why name of theory is structural functional theory. So that's how Durkheim looks at society. Karl Marx, another founder of sociology, how does he say? All societies are always in a state of conflict. It is not functional, it is in conflict. Conflict between the oppressor and the oppressed, privileged and underprivileged. So same society can be understood in a different way, and they are understood. So when we are discussing like that, what is the nature of human being, what is the nature of society, how individual is related with society, we are at the level of ontology. So you can evaluate each theory from in your discipline at ontological level. What we are becoming? We are becoming philosophical. पूरे जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे तो प्लीज एग्जामिन ईच रिसर्च at ontological level. What is the ontological assumption in the research? Now, what is epistemology? Epistemology is science of knowledge. How do we know? It's a big philosophical question. How do we know? Because, and you know, what is difference between,
आप मास्टर डिग्री और बीए मास्टर जो किया और पीएचडी में क्या अंतर है? मीन इट इज सिंपली दैट यू आर एट हायर लेवल. नो, up to master level you were consumer of knowledge. The knowledge that have been produced by earlier researchers, you have consumed them, you have read them. At research level you are expected to produce knowledge. Okay, so knowledge production, knowledge generation is the goal of research. Knowledge जब आप generate करते हैं तो एक question आएगा कि जो आपने generate, इसको knowledge कहेंगे कि नहीं कहेंगे, whether it is valid or not. All these questions fall in the domain of epistemology. So essentially, आप जाने या ना जाने, but all researchers are essentially an epistemologist. But most of them are not aware of this fact that they are. That's why a researcher has to get some training of philosophy, this part, epistemology. That under what condition valid knowledge can be produced? What are the factors that gives us false impression? What are the factors that obstructs our understanding of reality? Because आप किसी भी डिसिप्लिन में रियलिटी को तो जानना चाहते हैं. Can we know? अब इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज individual behavior, macro is of system. So there is one approach says that if you understand behavior of each individual and you pull them together, aggregate them, it will give idea about macro. Other thing, no. Macro is different from micro. So a whole is more than sum total of its part. So part को जोड़ने से whole का knowledge नहीं मिलता है. Whole is more than sum total of its part. So this is again a fundamental question. How do we know about whole? क्योंकि आप देखेंगे जब एक स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करेंगे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से, बट रिसर्च मेथड क्या है? यू गेट डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल. डू वी हैव एनी scope to get data about the whole society? No. We collect data from individual. But if your framework is structural functionalist or structurally Marxist, then you are talking about structure. And social structure is different from physical structure. So we are guided by this assumption that when we aggregate individuals' response, it will give us the idea about the system. But this is again an assumption. This assumption is challengeable. When we are writing like that, we are operating at the level of philosophy, epistemology. Axiology. Axiology is again ethics, concerned with ethics. And I have discussed about ethics. I have given you concept of structural violence, epistemic justice, epistemic injustice, epistemic violence also. So why we are doing research? Who will be benefited by that? Who will be affected by that? In fact, beginning of research should be guided by consideration of ethics. So axiology should be the first step. And then ontology and epistemology. Yeah. Yeah. बात वही कर रहे हैं, रिव्यू की तो बात कर रहे हैं. जब एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी सबके कर रहे हैं बात, तो जो आपने पीछे का देखा है रिसर्च, तो आप उसको कोई इवेलुएट कीजिए ना इसी टर्म में कि उनका ऑन्टोलॉजिकल एसम्पशन क्या था. डू यू एग्री विद दैट? मैंने क्या कहा शुरू में कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज नॉट सिंपली स्टेटिंग द फाइंडिंग ऑफ प्रीवियस रिसर्चर. Review of literature is critically evaluating what they have done, whether you agree with that or not. Do you find some limitation in the way they have done research? Do you agree with their ontological assumption? Do you agree with their epistemological assumption? Do you agree with their axiological assumption? If you are reflecting on all those while reviewing the paper, you are doing critical review of literature.
So I think this is the time to conclude the talk. Any other question? Thank you so much, sir, for philosophy. It should not stop. My train is at 8:15 in the evening, and I have no other work. So it's not. I am not in a hurry. Formally, it may be over, but I would be around. And I would love to interact with you. This is philosophical reflection. आप समझ सकते हैं एक जेएनयू का प्रोफेसर सुबह से शाम तक इसी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन it is we to digest. Perhaps we have not been trained in such a fashion to listen such type of academician or researcher. आपने डेप्थ देखी होगी और हर इशू को किस तरह से रखा गया है. Perhaps I am sure कि जिस बैकग्राउंड से हम लोग आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, आप रिलेट करिए. यू आर द राइट पर्सन टू रिलेट द नॉलेज. जेएनयू जिस तरह का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं अपने यहाँ से, आपने सुना होगा जेएनयू का प्रोडक्ट. आप समझिए कि वो कैसे प्रोडक्ट होते हैं. एक वर्ड पे घंटों घंटों बोला जा सकता है, जो कि शायद वी हैव बीन नॉट नर्चर्ड इन सच ए फैशन. बहुत ज़रूरी है. और व्हेन यू विल बी बैक टू योर इंस्टीट्यूशन और सिस्टम, देयर इज़ अ नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन सच ए फैशन अबाउट द सोसाइटी एंड रिफ्लेक्शन. whatever the actions or behavior you are revealing in the society one way or other way, it is going to affect one way or other way to others. हम पल भर में दिल तोड़ देते हैं, पल भर में किसी को डाउन कर देते हैं, लेकिन उसके असरात लाइफ लॉन्ग होते हैं. बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक था और आई एम श्योर सर ने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उसको जस्टिफाई किया. सर, इट इज़ प्रिविलेज टू वेलकम यू अगेन सर. यू हैव जस्टिफाइड द टॉपिक एंड वी आर ऑब्लाइज्ड कि आपने ये बात शेयर की और एक बेंचमार्क स्टैंड आपके सामने किया है कि जब इस स्टेज पर आएंगे तो सोचेंगे ज़रूर कि देखिए इंतहा है विचारों की और रिसर्च की. और बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन इट्स टाइम टू ब्रेक. और कोशिश करिए कि अच्छा रिसर्चर, अच्छा एकेडमिशियन, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए. पल भर में हम किसी को डाउन करने के लिए एक ऐसा इमोशन कह देते हैं और उस पर क्या असर पड़ा सोच नहीं सकते हैं. आपने तो अपना जो स्ट्रेस थी उतार दिया, लेकिन सामने वाले पे क्या असर पड़ा, इट मैटर्स ए लॉट. और दूसरा, व्हेन एवर यू आर प्लानिंग टू जज समवन, ख्याल रखें कि आपके मुकाबले वो क्या है. कहीं ना कहीं आपका एगोइज्म वहाँ पे आपका साथ दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है कि मुझे तो सामने वाले को डाउन करना है, कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है. लेकिन ट्रस्ट मी, एट द लास्ट यू आर गोइंग टू बी लूजर. नुकसान आप ही महसूस करेंगे कि समवन को अगर डाउन किया, महात्मा गांधी साहब को ट्रेन से निकाल के फेंक दिया ना, क्या फ़र्क पड़ा. फादर ऑफ द नेशन बना वही आदमी. एपीजे कलाम साहब के साथ क्या क्या नहीं हुआ, आज देखिए किस नाम से उनको लेबल दिया जाता है. तो मेरी अपील है सभी साथियों से कि अच्छे इंसान, अच्छे ह्यूमन बीइंग, जिससे कि हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारा एकेडमिया एक प्रोडक्टिव बने और हमारी एक पहचान बने कि हम इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं. बहुत सारी वैल्यूज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. आप इस क्लास में 10 दिन के लिए नहीं हैं. यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर पेरेंट्स, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ योर फैमिली. आप कैसे हैं, गॉट इट. तो मैं कंक्लूड करूंगा. बहुत शुक्रिया सर अगेन. एंड फ्रेंड्स, इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे. 3 दिन और हैं, टाइम करीब आ रहा है, लेकिन एक अजीब सा जो एक फैमिली का रिश्ता बना था वो थोड़ा सा अब सिमट रहा है. बहुत सारी प्लानिंग है और विजिट भी आपका ड्यू है.